हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन लर्निंग पाठशाला विशोना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोनेटिक साउंड, जिससे आप सबको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो नोटबुक है उसमें स्मॉल लेटर इस तरीके से लिख लेने हैं। फोनेटिक साउंड्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर आगे वर्ड्स बनाते हैं तो हमें क्या है, पढ़ने में इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउंड ए की साउंड क्या होगी? ए। A says a. B says b. B says b. B says b. C says k. C says k. क और ख का मिक्सचर होता है। D says d. D says d. E says a. E says a. F says f. F says f. G says g. G says g. H says H says I says E. I says E. J says j. J says j. K says k. K says k. L says l. L says l. M says m. M says m. N says m. N says m. O says o. O says o. P says p. P says p. Q says qu. Q says qu. R says r. R says r. S says s. S says T says t. T says t. U says a. U says u. V says w. V says w. W says w. W says w. X says x. X says x. Y says y. Z says z. Z says z. दोबारा से पढ़ें बच्चों। A says a ant. A apple. B says b bat. B ball. C says k cap. K cat. D says d dog. E says egg. Egg. F says flower. G says g grapes. H says horse. I says ice cream. J says jug. K says kite. K says kite.